वेलकम बैक लर्नर्स। सो आज का टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन। लेकिन उससे पहले हम ये पढ़ते क्यों हैं? वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटीग्रेशन। पर ऐसा क्यों? हमें इवन शेप का वॉल्यूम निकालना आता है, जैसे कि एक सिलेंडर या फिर एक कोन या फिर एक स्फीयर। पर क्या रियल लाइफ में भी शेप्स ऐसी होती हैं? जरा अपनी टेबल पे रखी हुई वाटर बॉटल पे नजर डालो या फिर गैस सिलेंडर पे, वो सारी शेप्स इवन नहीं होती। तो उनका वॉल्यूम कैसे निकाला जाए? अब एक बात अब मेरे साथ ध्यान से सोचना। मान लेते हैं कि मेरे पास एक अनइवन शेप है, जैसे कि ये, और मुझे इस अनइवन शेप का वॉल्यूम निकालना है। तो अगर मैं इस अनइवन शेप्स की छोटी छोटी डिस्क बना लूं, बहुत छोटी छोटी डिस्क, इन ब्लू लाइंस को देखना, जिनकी विड्थ लगभग 0 के बराबर हो, यानी dx, और उन सबको ऐड कर दूं। अब छोटी छोटी वैल्यू को ऐड करने के लिए कौन हेल्प करता है? हमारा इंटीग्रेशन। तो क्या मुझे इसकी टोटल वॉल्यूम मिल जाएगी? हाँ, बिल्कुल मिल जाएगी। तो आज हम यही सीखने वाले हैं। तो आओ फर्स्ट क्वेश्चन से इसे सीखने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन बोल रहा है, डायग्राम शोज द पार्ट ऑफ द कर्व इन विच द इक्वेशन y equals to x square plus 1, the shaded region is enclosed by a curve, the y-axis and the line y equals to 5. So this is the region. It is enclosed by the curve from 1 to 5 and it is rotated about the y-axis. So it is rotated about the y-axis. Very good. So it will form a 3D shape. Imagine this, if I rotate this shape, if I rotate this area about the y-axis, it will form a 3D shape. Find the volume obtained. Now, if you look very carefully, and if I cut a disc, a small disc, I'm just zooming that disc bit for you, but it is really small, a small disc. Okay, so will it shape like a cylinder or not? It is really small. Think about it. इसकी हाइट होगी dy के बराबर, yes or no? हाइट वुड बी dy मतलब लगभग 0। और जो इसका रेडियस होगा, ध्यान से देखो, इसका रेडियस कितना है? अगर हम इसके रेडियस को देखें तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे डिपेंड कर रहा है। सो अगर एक सिलेंडर की वॉल्यूम की हम बात करते हैं तो वो होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये एक सर्कुलर पाथ, सर्कुलर शेप है, तो इसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे रेडियस कितना है? x के बराबर है, तो पाई एक्स स्क्वायर, राइट। और हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाइट इसकी dy है लगभग 0, so we will multiply it by dy. Can I get the volume of this simple strip? एक स्ट्रिप की वॉल्यूम मिल जाएगी। ऐसे यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रिप्स होंगी, और अगर मैं उन सबको ऐड कर दूं 5 to 1, तो क्या मुझे टोटल वॉल्यूम मिल जाएगी? बस इसी तरीके से मैं वॉल्यूम ऑफ रोटेशन निकालता हूं। आओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलो, तो हमारी इसकी वॉल्यूम होगी पाई एक्स स्क्वायर। पाई एक कांस्टेंट था तो उसे इंटीग्रेशन से बाहर रख दिया, dy, और हम इसे इंटीग्रेट करने जा रहे हैं 1 से लेके 5 तक। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे dy लिखा है और मुझे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 पता है। मुझे x की वैल्यू डालनी है y की फॉर्म में, तो मैं x को सब्जेक्ट बनाऊंगा, 1 को इधर भेजेंगे, साइड चेंजेस, साइन चेंजेस, y माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब तो हमारा x इक्वल्स हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 1। नाउ आई विल पुट दिस वैल्यू एंड स्क्वायर इट। अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा। सोचना, खुद सोचना। तो वी विल इंटीग्रेट 1 to 5 y minus 1 dy. All right, very good. Now let's integrate it. It would be pi half y square minus y from 5 to 1. Put the values. Pi half 5 square minus 5, upper limit minus the lower limit, upper limit minus the lower limit, 1 by 2,
1 square minus 1. And a final answer would be 8 pi. Show me a double thumbs up from there. Easy or hard? Very good. Now let's look at this question. Now, over here, we are rotating about x-axis. So if we rotate it about x-axis, think with me. Don't just sit, think with me. Will the shape be like this or not? Now look at this one. If I zoom it in, now look at this, look at this. If I take this small strip like this, and this height would be very small, nearly 0. So I will name it at dx. What would be the radius over here? Radius would be, what is the radius? It is y, right? Yes or no? So what will be the volume of this cylinder? It would be pi y square, because y is the radius, times it by height. What is the height? Dx is the height, really small. And if I add all of them by integrating them from 1 to 2, I will get the volume. Yes or no? So the same thing I will do over here. What I will do? To find the volume, I will just integrate. I will keep the pi outside. From 1 to 2, I have to integrate y square dx. Now just square this y, because I have to put the value of y in form of x. So the volume would be pi 1 to 2. I would square 3x minus 2 to the power 3 by 2. You can look, this is the equation of the curve. Just square it and dx. This would give me pi 1 2. If I multiply this power with both of them, with 1 as well, okay, and with 3 by 2 as well, okay. For example, if I have a square to the power 3, this would be 2 is multiplied by 3, it will become a to the power 6. If I have a 1 upon a 2 by 3 to the power 3, okay, but multiply this 3 by this also, 1 to the power 1 also, it will become 1 to the power 1 into 3 upon a to the power 2 into 3 times it by 3. 3 will be cancelled. You multiply the power by both of them, okay, so it will become 1 upon a square. In the same way, if I multiply the power, it will become 1 square over 3x minus 2 to the power 3 by 2 and times it by 2 dx. Now I hope you can see that the volume will be equals to pi 1 2 upon 3x minus 2 to the power 3 dx. Now let's integrate it directly. Volume equals to, if I integrate this function, this one, let me write the next step as well. This one will become like this, pi 1 2. If it goes to the numerator, the power will become negative, 3x minus 2 to the power minus 3 dx. Yes or no? Power will become negative. Now what is the rule of integrating this? Just add 1 to the power. If I add 1 to minus 3, it will be minus 2. So I have to divide it by minus 2 first. Right? Now I have to divide it by the coefficient of x. That is, speak louder, I cannot hear you. That is 3. Very good. And I can write the function like this, 3x minus 2. I have added 1 to the power. So the power has now become minus 2. Alright. Now the limits. Now let's apply the limits. That is, let's put pi over here. And the limits were 1 to 2. First put the upper limit. Then subtract it by the lower limit. And you will get your answer 5 pi by 30. Very good, learners. You got till this one. Now let's move on to the next question. Now this question is a bit interesting. This is really an interesting question. And now in this question, they have merged the concept of volume as well and area between the line and curve.
So we have already studied this, the area between the line and curve. All right. So now let's try to solve this question. The diagram shows the part of the curve with equation y square equals to x minus 2, x equals to 5 and y equals to 1. All right. The shaded region enclosed by the curves and the line is rotated about 360 degree from the x-axis. Okay, so this region is rotated about the x-axis. About the x-axis is really important. So about this line we are rotating this. Okay, now imagine this being rotated by this line. Imagine this in your head. Imagine this shape being rotated about the x-axis. What shape it will form? What shape will it form? Think about it for a second. Pause it. Pause the video now and think about it. What shape will it form? Now, one thing is clear that I have to find this intersection point. मुझे intersection point पता लगाना ही पड़ेगा क्योंकि ये एरिया इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में है, राइट? तो आओ पहले इस पॉइंट को पता लगाते हैं. तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये y इक्वल्स टू 1 लाइन है, y इक्वल्स टू 1 और एक कर्व है x स्क्वायर माइनस 2. अब ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो अगर मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है तो y की जगह यहाँ 1 पुट कर दूँ. y की जगह हम यहाँ पे 1 पुट कर देते हैं. 1 इक्वल्स टू x माइनस 2, x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ से 3. वेरी गुड. So this point is 3. Now we know that we have to find the area between 3 and 5. अब हम कैसे करेंगे इसको? ये एरिया इनक्लोज्ड कैसे निकलता था? ऊपर वाला फंक्शन होता था fx और नीचे वाला होता था gx और हम fx में से gx को क्या कर देते थे? माइनस कर देते थे. यस और नो? या फिर हम एक और चीज कर सकते हैं. यहाँ पे हम ऊपर वाले कर्व को 3 से लेके 5 तक रोटेट करते हैं. पूरे को रोटेट करते हैं. पूरे कर्व को रोटेट करते हैं. आओ रोटेट करते हैं. अब इसमें से इस सिलेंडर को ध्यान से सुनना, मैं दूसरे कलर यूज करता हूँ. इस सिलेंडर को जिसका रेडियस 1 है, ये 1 है ना इसका रेडियस, ध्यान से देखो. इस सिलेंडर को ये 1 रेडियस वाले सिलेंडर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. ये वाला अगर 1 रेडियस वाले सिलेंडर को हम रेड वाले में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरे पास नीडेड वॉल्यूम आ जाएगी. जस्ट थिंक अबाउट इट. मैंने fx वाले कर्व को 360 डिग्री रोटेट किया और उसमें से ये 1 रेडियस वाले सिलेंडर को सब्ट्रैक्ट कर दिया. तो क्या मेरे पास नीडेड वॉल्यूम आ जाएगी? बस मैं वही करना चाहता हूँ. पहले तो हम क्या करते हैं, हम इस रेड वाले कर्व को fx को इंटीग्रेट करते हैं 3 से लेके 5. 3 से लेके 5 तक हम इंटीग्रेट करते हैं पाई, और y स्क्वायर की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है, x माइनस 2 है dx. और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये सिलेंडर. इसका फॉर्मूला मुझे पता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर. रेडियस कितना है इसका? 1. ओके, इंटू हाइट कितनी है? 3 से लेके 5 तक की हाइट होगी यानी कि 2. राइट, इसे डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देंगे. आ जाओ इंटीग्रेट करते हैं. तो दिस वुड बी पाई x square by 2 minus 2x from 5 to 3 subtracted by 2 pi. Just subtract 2 pi from this. So if I just put the values upper limit minus lower limit, it will come 4 pi. 4 pi minus 2 pi equals to 2 pi. So the volume of revolution of this red region would be 2 pi. Okay learners, that's it for today's class. I hope you have enjoyed.